Good afternoon, Harena. Good afternoon, friends. My name is Raj. I am a member of AA. Hi, Raj. It's entirely by the grace of God. The God I found in the 12-step program mentioned in the big book, Alcoholic Anonymous. Thanks, Alok, for calling me here. Thanks, Rakesh, for bringing me from the station. We thought Rakesh and I and Chandra will sit. We sat comfortably. Then Mrs. Rakesh came. Then somebody else came. Then somebody else came. We were 6 people squeezed in a car. But that's what we learn in AA. To adjust, to accept, to take things as they are. And it is very easy to see a thing like this, सब लोग बैठा है आसान से, सब अच्छा है, सब रूम है, but the enormous work that goes behind that, बहुत मेहनत होता है, बहुत प्लानिंग होता है, और जो जो उसमें इन्वॉल्व है, I'm very thankful to them. मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, so is my English, so you have to tolerate both of that. And if you concentrate on my Hindi accent, you'll miss the point. So you look at what I am telling and not how I am telling. Welcome Al-Anons. Welcome all the members here. It's nice to see people. अगर हमने सोचा तो ये 12 steps, the same 12 steps Al-Anons have. They don't have a drinking problem. Their problem is an alcoholic. The alcoholic has the same 12 steps. He's got an alcohol problem. Gamblers Anonymous, they have the same 12 steps. They have gambling problem. Overeaters, they use the same 12 steps. So how come this 12 steps is working for Al-Anon, is working for alcoholic, is working for overeater, working for a gambler? अगर दवाई है, पेट के लिए एक दवाई होता है, सर दर्द के लिए अलग दवाई होता है, हार्ट के लिए अलग दवाई होता है. ऐसे दवाई नहीं है जो एक दवाई खाया तो सब बीमारी जाता है. वो कैसे हो सकता है? Then you call that medicine a universal medicine. Universal means for everything. One pill for all ill. And where did our 12 steps come from? अगर हमें ध्यान से देखा तो पहले जो सब लोग अल्कोहलिज्म से बच के ये बुक लिखा है, वो लोग को ये नहीं था. They never had Alcoholic Anonymous. They never had meetings, they never had fellowship. How did they recover from a seemingly impossible disease, fatal, progressive, irreversible? वो कैसे हुआ? Then the question comes is, what is the origin of these 12 steps? What actually are the 12 steps? Being a 12 steps program and a workshop, we'll deal with this, and there are some of the things which I have tell, you may not agree. You may be disturbed. If you are disturbed, it is good. Why? Because the message to an alcoholic should carry depth and weight. That is what the book says. And if it has got depth and weight, it is going to upset you. It is going to make you ask certain questions. जैसे हमारा सोच है, जब तक सब ठीक है, फिर भी जो इनर कॉन्शियस पूछता है, जो सही कर रहे क्या, बराबर जा रहे हैं क्या? Once that comes, that person individually is confused. So always before clarity, there is a confusion. So what is the origin of these 12 steps? ये किधर से आया? This has come from a first century Christianity, and particularly from a group called Oxford Group. It was started by an evangelist priest by name Sam Buckman. वो क्या करता था? कैवलरी चर्च में सबको सूप बांटता था, पुअर पीपल को. हैप्पी था वो.
और एक दिन वो जो चर्च का जो मैनेजमेंट है बताया आज से हम सूप देना बंद कर रहे हैं। उसको बहुत लगा, अरे यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा गुस्सा था। एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो रन बाय प्रीस्ट ओनली। एंड ये क्या करता था, बाइबल स्टडी करता था, सब लोग आके समझते थे ये बाइबल में क्या है बताए, तो सबको एक्साइटमेंट था। ही वॉज ट्राइंग टू रीड द बाइबल, nobody was listening or following. He went to England, he tried to pass on, nobody was listening. फिर एक दिन चर्च में जाके प्रे कर रहा है और पूछ रहा है, what is the problem? Why am I not able to connect to another human being? वो चर्च का क्रॉस है एकदम कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होके लेटर आई हो गया। Why I am not able to connect with you? Because of I. It is not we, it is me. I am angry with the priest because they are not doing it my way. When you are having certain resentment, anger, hatred, jealousy, fear, any negative quality, you block the channel of goodness inside yourself. That will isolate you from yourself, from friends, family. So he understood that the self is a problem for everything. And he went into first century Christianity and he picked up certain things and he started forming this Oxford group. Now the question is, everybody sitting in this room has got that I. You cannot get rid of it. शाम को आके मैंने सोचा पिक्चर जाएंगे, मैं सोचा डिनर पे जाएंगे वाइफ, तो मैं सोच रहा हूं, हम क्या सोच रहे नहीं है। जब तक हम मैं तू नहीं आता, when you start saying we, there is no I. And this particular I is the basis of disease of alcoholism. And this does not go by just stopping drinking. ये बीमारी दारू बंद करने से नहीं जाता है, दारू बंद करने से बढ़ता है। ताकि अल्कोहलिक को दारू है एक पेन किलर, जीने के लिए उसको दारू चाहिए, क्योंकि जीना दर्द हो रहा है उसका, जीने के लिए दर्द है उसको, मालूम नहीं क्यों। अगर मालूम होता तो वो खुद का ठीक कर सकता था। अजीब लग रहा है उसको, एक कालीपन, एक डर, एक आइसोलेशन। तो जब ही एक अल्कोहलिक बोलता है मैं कल से दारू बंद कर सकता हूं, उसको मालूम नहीं है अल्कोहलिज्म क्या है। अगर पेन किलर बंद कर दिया तो दर्द ज्यादा होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 20 दिन बर्दाश्त कर सकता है, पर सबका बर्दाश्त करने का एक लिमिट है, उसके बाद वो पेन किलर लेना ही पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? टू गेट रिड ऑफ द पेन। व्हाट एक्चुअली इज योर पेन? ये दर्द क्या है, क्यों पी रहे? So how this whole episode started was in 1910s, 1915s. There is a person called Roland Hazard. Those who know the history of AA may know. He was the one who got us the message. और अमेरिका में बहुत बड़ा रईस अमीर आदमी था, वो बहुत अल्कोहल पी के अमेरिका में सब ट्रीटमेंट सेंटर गया, कुछ नहीं हुआ उधर। Then he came to a place in Europe and met a very renowned psychiatrist by name Carl Gustav Jung, and he stays there for 1 year. और 1 साल के बाद जाता है, फिर 1 महीने के अंदर दोबारा पीना चालू हो गया, और डॉक्टर के पास आके पूछता है, डॉक्टर मैं बंद नहीं कर सकता हूं क्या? Doctor says, I have given the same treatment to many people,
but I have never seen one alcoholic recover of your description. अब ये के अंदर बहुत लोग आता है ड्रिंकर्स. There are heavy drinkers, there are hard drinkers, there are chronic alcoholics. The big book and the 12 steps are meant for chronic alcoholics. Who is a chronic alcoholic? That is the next we will see. So the doctor says, until otherwise you are going to have a spiritual experience, you will not survive. Last step of our Alcoholic Anonymous is having had a spiritual awakening as a result of these steps. It is not a result of my understanding, my education, my theological background, metaphysical knowledge, caste, creed, nationality, religion, sex. It's not that. Having had a spiritual awakening experience as a result of these steps. ये बहुत लोग क्या करते हैं, ये स्टेप्स क्या है समझ के मैं करूं, वो नहीं कर सकते. ये स्टेप्स करने के बाद समझ में आता है. जैसे बच्चा एलकेजी जाता है, टीचर को नहीं पूछ सकते एलकेजी क्या है बताओ, फिर मैं आता हूं, मेरे को पहले समझाओ एलकेजी क्या है, ये सब क्या किताब है, क्या क्लास है, बोर्ड है, क्या है, मैं बताओ. तो बच्चा एलकेजी किया, एलकेजी करके फर्स्ट स्टैंडर्ड आया तो उसको मालूम होता है एलकेजी क्या चीज है. एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. Having had a spiritual experience means it is nothing to talk. Of course you have to talk, you have to read. But there is a doing. Spirituality is not talking. It is not sitting like Buddha. Buddha जैसे ऐसे बैठ के. दोस्तों संत बनना बहुत आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल है. संत का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मोबाइल बिल भरने का, ना कॉलेज फीस, ना स्कूल फीस, ना इनकम टैक्स. और पैसे भी आधा संत जेल में, 12 बचा है बेल में. तो इंसान ही होता है बस. तो हम इंसान बनने के लिए कोशिश कर रहे इधर. So and this fellow says, what is a spiritual experience? ये क्या चीज है spiritual experience? अब ये मैकेनिक पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियर होके 10 साल मैकेनिक्स में काम किया तो यू गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस. If you have done mathematics and something like that, you got accounting experience. You have worked in textile shop, did something, you got textile experience. If you have done something spiritually, then you got spiritual experience. So if you do the 11 steps, the 11 steps are connected, which gives you a spiritual experience. So having had a spiritual experience as a result of these steps, that is all. They never said you have to understand this. But alcoholic को समझने का सब चीज, तो मेरे को समझने का फिर करूंगा. तो इसलिए 90% ये मैं नहीं करता है. और जो किताब है बिग बुक, इसमें 164 पेजेस में जो है क्लियर कट प्रिसाइज डायरेक्शंस ऑफ हाउ टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म. बट वी डोंट बाय द बुक, वी डोंट रीड द बुक. मीटिंग में बोलते हैं भाई जो चाहिए ले लो, जो नहीं चाहिए फेंक दो. तो इसको फेंक दिया बाहर, ये 12 पैरी नहीं चाहिए. जो मर्जी करो, पूरा फ्रीडम है. चलो कल दारू पिएंगे. और नया कमर को क्या कम करने के लिए आया? दिस इज ईगो डिफ्लेक्शन प्रोग्राम. हम नया कमर को बुला के बात कीजिए. और अल्कोहलिक को सबसे खुशी क्या है? उसके बारे में बात करने का. और 10 मिनट बात करेगा, सब लोग ताली बजाए, इतना खुशी है, ही विल डिजर्व अ ड्रिंक, ही विल गो एंड ड्रिंक. यू आर द यंग ब्लड ऑफ ये, यू आर द फ्यूचर ऑफ ये. तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दिया उसका सर पे, मैं फ्यूचर ऑफ ये को कैसे बिल्ड करूं मैं. अरे बाप रे, 2 लार्ज देना भाई.
तो आर वी पासिंग ऑन द मैसेज करेक्टली? बिकॉज मैसेज क्या है? So in the 12th step it says, having had a spiritual experience as a result of these steps, we try to carry this message. ये मैसेज कैरी करने के लिए दो कंडीशन है. I should have a spiritual experience and I should know these 12 steps are the message. ये छोड़ के और कुछ नहीं है. ये छोड़ के कुछ भी मैं बात करूं वो मेरा ओपिनियन होगा. मेरा ओपिनियन को मेरा वाइफ नहीं मानती है, आप लोग कैसे माने? She doesn't bother and my kids don't bother about my ideas. So my ideas, my opinions, I cannot share because it has not helped me. What I have to share is my experience. Now coming back to Roland Hazard, Roland Hazard पूछता है ये spiritual experience क्या है? इसका मतलब क्या है? लाइट आएगा क्या? भगवान आएगा क्या? भजन करने का क्या? क्या करने का for this spiritual experience? And the doctor did not have the program. He knew the solution. So he said you have to try some spiritual organization. So Roland Hazard joins Oxford group. He gets a spiritual experience. उसका एक साल के बाद वो he wants to celebrate his first birthday. He accidentally finds another friend by name Abby Thatcher, and he takes Abby Thatcher from problem and takes him. Abby Thatcher has a spiritual experience and he passes this on to Bill W. Bill W नहीं सुनता है उसको. Cold November day, Abby Thatcher comes to his house, which is beautifully written in the book. And Bill W says, when my friend spoke about God, my mind snapped shut. God बोल दिया तो mind clamp हो गया. But then Bill W does the steps, and directly as a result of the steps he gets a experience. Now what actually is a spiritual experience? What happens in a spiritual experience? The doctor explains, your ideas, emotions and attitudes will be cast to one side. हमारा पुराना सोच, पुराना attitude और emotions. इंसान का जो चीज है उसका सोच, उसका इमोशन, उसका एटीट्यूड है. वो नहीं है तो मशीन है. तो मेरा पुराना सोच और इमोशन और एटीट्यूड को निकाल दिया तो मैं उसके साथ चला गया. I am a new person now because I am not thinking like the old Raj. My attitude is not like the old Raj. My behavior is not like the old Raj. The book says we were reborn. That old Raj has to die. And dying is a very painful process. And what is holding the person together is his ego. I, me, मैं. So step by step when the ego is deflated, you come to this 11th step and 12th step. But how did this pura 12 steps were put into form is, from the Dr. William Silkworth, जिसको कहानी मालूम है, जिसको डॉक्टर्स ओपिनियन मालूम है, उसको हुआ. उस जमाने में मतलब 78 years बैक डॉक्टर और पेशेंट आज जैसे नहीं बात कर सकते हैं. आज मेरा कार्डियोलॉजिस्ट को मैं फोन पे बात कर सकता हूँ, क्या हाल है बोल के. उस जमाने में बहुत रिस्पेक्ट है. डॉक्टर साहब उसको बहुत इज्जत देते थे. और वो क्यों एक बेवड़े के साथ बैठ के बात करने का क्या था. वो भी वो 1929 शेयर मार्केट में उसको भी पैसे सब गया. तो वो एक चार्ली टाउन हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया जहां बिल डब्ल्यू पेशेंट था. दोनों में बातचीत हुई और बिल ने बताया मैं शेयर मार्केट था. तो बेटे को क्या होता है, वो जो पुराना ये नहीं छोड़ता है, ग्लोरी. उस जमाने में क्या था,
मैं ये था वो था। तो डॉक्टर ने बताया यार मैं भी 29 में ये से हो गया। तो दिस इज हाउ दे बिल्ड देयर फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और जो डॉक्टर सेम मॉरल साइकोलॉजी दे रहे, मॉरल साइकोलॉजी मतलब भाई देखो तुम जो कर रहे गलत है, ये है वो है। 100 पेशेंट आया, 90 पेशेंट ठीक होके चला गया। बिल जैसे 10 लोग वापस आ रहे और मर रहे। Now the doctor does not know I am giving the same moral psychology, same treatment. 90% of the alcoholics they recover, but the 10% don't recover. So ध्यान से सुनिए, जो पीने वाला के अंदर, हेवी ड्रिंकर के अंदर, हार्ड ड्रिंकर के अंदर, एक्यूट अल्कोहलिक के अंदर एक अलग जात है, वो क्रॉनिक अल्कोहलिक। तो विल डब्ल्यू को बोलता है यार तुम्हारा आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर यू, बट आई डू बिलीव यू गॉट सम काइंड ऑफ एलर्जी बिकॉज इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग यू आर ड्रिंकिंग एंड सम मेंटल ऑब्सेशन इज ट्रिगरिंग। नाउ दीज टू थिंग्स are main causes for drinking, but finding the cause is not the cure. वो इलाज नहीं होता है। So the doctor knew the problem. So in 1934 in the hospital, Bill W. was the only person in the entire universe who knew 3 things. He knew what the problem was from Dr. Silkworth. He knew what the solution was from Roland Hazard, Carl Gustav Jung, and he knew the solution, the method of the solution from the Oxford group, because he did that. And that is how our 12 steps came. हमारा 4th step है, हिंदुइज्म में बोलता है आत्मविचार। अगर आप संत बनने से पहले आत्मविचार करने का, सच में, और आप एक गुरु के पास जाके कन्फेशन करना पड़ता है, क्या क्या पाप किया। तो गुरु बोलते हैं जिस चीज को क्या किया उसको जाके परिहार करो, वो स्टेप 8 और 9 होता है। So why these steps work for a Hindu, Mohammedan, Christian or whatever, all human beings irrespective of caste, creed, class or sex, is because there is no religion involved. Religion और spirituality का फर्क क्या है? ड्रैम्बुई, VSOP, हेनेसी, वैट 69, डिम्पल, हेग, सब लेबल है। जब तक लेबल है, ये विस्की, ये ब्रांडी, ये जिन है, ये है, वो है, सबका लेबल निकाल दो, अभी रखो। किसी को बुलाओ, पूछो ये क्या है, वो बताएगा दारू। उतना ही है। स्पिरिचुअलिटी उतना ही है। Everything is God, but we don't have a label, whether it is God, Ram or Jesus. That is the only difference. We are not going through religion. So this is the origin of 12 steps, and you have to understand these 12 steps were there before Alcoholics Anonymous came into existence. Our 100 members, including our 2 co-founders, did not have Alcoholics Anonymous. They did not have meetings. That time their recovery rate was 75%. That is because they did these 12 steps. आज मीटिंग में बुक के बारे में बात किया तो कुछ लोग बोलते हैं हमको शाना नहीं बनने का, हमको बुक नहीं पढ़ने का। एंड हाउ इट वर्क्स, हम डेली पढ़ते हैं मीटिंग में, उसमें लिखा है सम ऑफ दीज थिंग्स वी balked means we don't agree. We tried to find a easier and softer method. We held on to our old ideas. The result were nil. Half measures availed us nothing. ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर 1 लीटर का एक वेसल ले लो और कुछ शक्कर ले लो, आधा तो आधा आएगा, आधा लीटर तो आएगा। इसमें लिखा है हाफ मेजर्स availed us nothing.
तो ये प्रोग्राम आधा नहीं ले सकते, कर रहे तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। और सब लोग बोलते हैं इट इज ओनली सजेस्टेड 12 स्टेप्स। स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज सजेस्टेड। मंदिर के अंदर जाने के बाद इधर भगवान को प्रार्थना करो नहीं लिखता है। आके प्रार्थना करो, नहीं करो तुम्हारा मर्जी है। नारियल फोड़ो, नहीं फोड़ो तुम्हारा मर्जी है। कुछ मांगो, नहीं मांगो तुम्हारा मर्जी है। मंदिर को आओ, मत आओ तुम्हारा मर्जी है। Then how we can try to make everybody aware? बहुत कुछ लोग आ रहे हैं, को 10 दिन बैठेगा, 15 दिन बैठेगा, और जब ये प्रोग्राम सुनता है वो सब उसका इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है। एडमिटेड वी आर पावरलेस। कोई बात है क्या उसमें? एडमिटेड वी आर पावरलेस, नेगेटिविटी चालू हो में, केम टू बिलीव, कुछ उसका समझ में नहीं आता है। तो देयर इज अ थिंग इन दिस थिंग कॉल्ड कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी को पूछा मैंने थोड़ा रबड़ी खाओ, पसंद नहीं। यार कभी खाया लाइफ में? नहीं। अभी खाया नहीं है और उसको पसंद नहीं है, बट माइंड में टेस्ट करके वो ज्ञानी क्या बोल दिया, मेरे को नहीं चाहिए। ये 12 स्टेप्स भी ऐसे, मैं नहीं करूंगा, ताकि वो उसको समझ में आके वो ठीक नहीं है, फेंक दिया उसको। नहीं, वो किताब में 164 पेजेस में क्या है, हमारा भी आजकल क्या बात करता है, वो 2 हो गया। आराम से करो भाई, एक दिन में अल्कोहलिक नहीं बना तुमने। अगर समझो हार्ट पेशेंट आया, हार्ट पकड़ के डॉक्टर के पास, मरने वाला है, वो डॉक्टर हंसते हंसते बोल रहे एक दिन में तुमको कोलेस्ट्रॉल नहीं आया भाई, कितना दिन से तुम जलेबी खाया, घी खाया, मक्खन खाया, लस्सी खाया, हाँ मैं आराम से करता हूं। मर जाएगा पेशेंट। जितना डेंजर वो है, अल्कोहलिक भी वही है। एक्चुअली आई हैव सीन मेनी पीपल डाई देन रिकवर। बहुत कम है रिकवरी रेट, बिकॉज द ईगो विल नॉट अलाउ अस टू डू दिस प्रोग्राम। ईगो मना करता है। So now we generally have an idea of this 12 steps, from where it came and how it got incorporated. And we have to understand this AA came into existence after 100 people realized they were all chronic drinkers. When should I take the steps? The book says we took the steps with the desperation of a drowning man. जो डूब रहे उसका जो डेस्परेशन होगा वो होना चाहिए। और ये सब लोग को मालूम नहीं है। आप जिसको हाथ में पकड़ा है, जिसको हाथ पकड़ा है, किसी को मालूम नहीं है। वो आपको मालूम पड़ेगा बाद में, when you have the spiritual experience. बट किताब में बहुत अच्छा लिखा है, what we held on seemed as a reef, flimsy reef, later on turned out to be a loving hand of God. जो ड्राउनिंग का टाइप है, किसी को पकड़ा हमने बहुत हल्का सा, इसको बहुत मजबूत हो गया वो, और मैं बाहर आ गया। फिर देखा मैंने, दैट इज द हैंड ऑफ गॉड, इट इज नॉट रीफ।